हेलो दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले अपने ड्राइंग पेज को एक टेप की मदद से चिपकाता हूँ। टेप से चिपकाने के बाद हमारा ड्राइंग पेज खिसकता नहीं है। इससे हमें ड्राइंग करने में आसानी होती है फ्रेंड। अगर पेज खिसकेगा तो हमें ड्राइंग करने में दिक्कत होती है और फिर उसके साथ साथ फिर हमारी ड्राइंग भी बिगड़ती है। तो फ्रेंड, हम अपने ड्राइंग पेज को किसी भी टेप की मदद से चिपका लेंगे। फिर हम उसके बाद उसमें आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के लिए फ्रेंड हमें सबसे पहले अपनी आउटलाइन को बहुत ही हल्के हाथ से तरीके से चलानी पड़ती है। क्या फ्रेंड, अगर हमारी आउटलाइन जितनी भी हल्की होगी तो हमें फिर बाद में उतनी ही आसानी होगी। अगर फ्रेंड हम शुरुआत में ही डार्क पेंसिल चला देंगे तो फिर बाद में हमें दिक्कत होती है। क्या है, उससे निशान आ जाते हैं, फिर वो बाद में मिटते नहीं हैं। उसके लिए हमें अपनी पेंसिल की आउटलाइन को बहुत ही हल्के से बनानी होगी। तो फ्रेंड, अभी जैसे कि मैं बना रहा हूँ, तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी आउटलाइन को कितने हल्के तरीके से बनाता हूँ। तो हमारी ड्राइंग में सबसे ज़रूरी आउटलाइन होती है। अगर हमारी आउटलाइन बिल्कुल क्लियर होगी तो फिर हमें ड्राइंग करने में बहुत ही आसानी होती है फ्रेंड। तो दोस्तों, हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड, आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद हमने उसे इरेज़र से साफ़ कर लिया है। इतना साफ़ करना है कि फ्रेंड हमें अपनी आउटलाइन थोड़ी थोड़ी दिखनी भी चाहिए। तो फ्रेंड, उसके बाद हम अपनी पेंसिल को शेड करेंगे। पेंसिल चलाएंगे ऐसे जिससे हमारी शेड होती जाएगी। फ्रेंड, जहाँ पर हमें डार्क पार्ट चाहिए वहाँ पर अपनी पेंसिल को हम डार्क चला देंगे या फिर प्रेशर से चला देंगे। और फिर उसके साथ साथ हम अपने ब्रश का भी यूज करते जाएंगे। मैं जितनी भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं ब्रश का यूज करता हूँ। और फिर उसके बाद में जहाँ पर हमें डार्क शेडिंग चाहिए पड़ती है तो फिर वहाँ पेपर स्टम्प का यूज करता हूँ। क्या है फ्रेंड, ब्रश हमारा डार्क शेड नहीं कर पाता है, तो जिसकी मदद हमें पेंसिल स्टम्प से करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं कि जहाँ हमारी पेंसिल की डार्क निशान है तो फिर मैं वहाँ पेंसिल को प्रेशर लगा के यूज कर रहा हूँ। और फिर उसके साथ साथ मैं ब्रश का भी यूज कर रहा हूँ। ब्रश से शेडिंग करने के बाद मैं उस पर दोबारा से पेंसिल वर्क चलाता हूँ। तो फ्रेंड, हमारा जितना भी सर्कल होता है एक बार में, हमें उतना एक बार में कंप्लीट करना पड़ता है। तो फ्रेंड, आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं पेंसिल से शेड करने के बाद मैं उसमें ब्रश का यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, जहाँ हमारा डार्क पार्ट है मैं उसमें पेंसिल को प्रेशर से यूज कर रहा हूँ। एक बार पूरी ड्राइंग होने के बाद फ्रेंड मैं उस पर दोबारा से वर्क करूँगा। दोबारा से वर्क करने के बाद मैं उसमें हाईलाइट दूंगा। फिर हाईलाइट देने के बाद मैं फिर उस पर दोबारा वर्क करूँगा। फ्रेंड, हमें रियलिस्टिक वर्क में हमें 2 से 3 बार प्रोसेस करनी पड़ती है। और फ्रेंड, मैं एक ही पेंसिल से पूरी ड्राइंग बना रहा हूँ। फ्रेंड, उसी से मैं लाइट शेडिंग करता हूँ, उसी से मैं डार्क शेडिंग करता हूँ। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने लास्ट की ओर। तो आप तब तक देखते रहिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी एक बार ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस पे एक बार और वर्क करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा डार्क पार्ट है वहाँ पर हमें डार्क पार्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पर लाइट पार्ट है तो वहाँ हमें इरेज़र से साफ़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं इरेज़र से यूज़ करके इसको हल्का कर रहा हूँ शेड को। ऐसा करने से ही हमारी रियलिस्टिक ड्राइंग बनती है फ्रेंड। तो फ्रेंड रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। जैसे ये हमारा एक बार पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जितना टाइम अभी लगा है फ्रेंड इतना ही टाइम अब फिर और लगेगा। Sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दूसरी बार डार्क होने के बाद आप देख सकते हैं दूसरी बार में कितना अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमें दूसरी बार भी करना पड़ेगा जैसा कि पहली बार किया था। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हमारा फाइनल वर्क तैयार है दोस्तों। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on